Hello everyone, this is CSES Chintan Devalia, teaching financial management at intermediate and strategic financial management at CA final level. I'm sure your preparation might be rocking for the upcoming exams, and with the kind of revision sessions we are taking up right now, this is going to take your preparation at the next level. So without wasting more time, let us start with the topic for the day. Topic for the day is very simple. The most easy chapter of financial management, but little bit spicy, little bit different as far as our routine chapter is concerned. The name is cash budget. Now what is cash budget, student? The cash budget is nothing but a tool of forecasting short term requirement of the cash. मतलब क्या कि स्टूडेंट हम यहाँ पे पैसों का प्लानिंग करेंगे, एंड जब पैसों का प्लानिंग करेंगे हम इनफ्लो आउटफ्लो मतलब इन शॉर्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट्स को हम प्रेडिक्ट करेंगे, बट फॉर अ शॉर्ट टर्म पर्पस, नॉट एक्सीडिंग 1 year, बिकॉज कैश इटसेल्फ इज अ कंपोनेंट ऑफ करंट असेट्स. तो वी कैन नॉट प्लान मोर देन 1 year. दैट मीन्स 1 साल का हम कैश का रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑन अ हायर साइड प्लान करेंगे. एग्जाम व्यू पॉइंट मिनिमम 3 months, मैक्सिमम 6 months. इससे ज्यादा कैश बजट आएगा नहीं. डन. Question is, why do we prepare cash budget? बहुत simple है. It is a tool of forward planning, student. When I say it's a tool of forward planning, what does it mean? कि हम आने वाले 3, 4, 5, 6, 2 महीने का हम प्लानिंग करते, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ जाएगा. And depending upon that, we can plan 2 different things. One is investment, and second is financing. अर्थात अगर आपको लगता है आने वाले कुछ टाइम में मेरा रिसिप्ट्स 20 करोड़ होगा एंड पेमेंट 5 करोड़ होगा, तो 15 करोड़ स्टूडेंट मेरे पास क्या होगा, एक्सेस होगा. यस नो. एंड जब मैं बोलता हूं 15 करोड़ एक्सेस होगा, व्हाट डज इट मीन? मुझे अभी से मालूम है आने वाले 2-3 महीने में ऐसा 15 करोड़ मेरे पास एक्सेस आने वाला है. तो I have a time to evaluate the best options available in the market, and वही हम इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करेंगे. एंड वही फाइनेंसिंग. लेट मी टेक एग्जांपल. रिसिप्ट 20 करोड़ होगा लेकिन मेरा पेमेंट 28 करोड़ होगा, तो 8 करोड़ क्या हुआ स्टूडेंट? इट्स अ शॉर्टफॉल. यस नो. एंड अगर मुझे मालूम है देयर विल बी शॉर्टफॉल और अ डेफिसिट, तो आई हैव अ टाइम टू रेज फंड्स either by bank or issue of equity share, preference share, debenture, whatever you are planning, student. You have a time to arrange the funds. Otherwise, overnight, company might be in trouble if there is excess shortfall. So, student, there are 2 objectives. One is investing, and second is financing. Fair enough. Question arises: how do we prepare cash budget? So, cash budget is very simple. It is like a statement which shows opening balance plus receipts minus payment gives you closing balance. So this is your format: opening balance plus receipts. All these receipts, routine receipt, cash sales, collection from debtors, issue of equity preference debentures, interest income, dividend income, all this will be here. Sale of fixed asset and so on. And these are the payments. Opposite, that is cash purchase, payment to creditors, a redemption of preference, debenture, buyback of equity, payment of expenses like salary, rent, advertisement, variable overhead, fixed overhead. Depreciation nahi aayega because we are talking about cash. So don't dare to take all the payments expenses here. We'll take only those expenses which are actually paid in cash. So no depreciation, no bad debt reserve, and so on. So these are nothing but payments, and A minus B will be closing balance, which might be adjusted with certain borrowings and repayments or investment depending upon what company is targeting a minimum cash balance. Are you getting this? If assume करो आपका कैश बैलेंस 20,000 आ रहा है, A minus B, और कंपनी बोलता है हमको 50,000 रखने का ही है, तो आप 30,000 क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट. 30,000 क्या करोगे? बोरोइंग करोगे स्टूडेंट. तो 50,000 हो गया. एग्जाम्पल है ये. नेक्स्ट टाइम आपका बैलेंस आ रहा है, लेट मी टेक 2,000 नेगेटिव. कंपनी बोलता हमको तो 50,000 रखने का ही है,
एंड 50,000 रखना है तो स्टूडेंट क्या करेंगे, हाँ 50,000 रखना है तो क्या करेंगे, 52,000 का हम क्या करेंगे, बोरोइंग करेंगे, हो जाएगा 50 डन। अगर मेरे पास अज्यूम करो ए माइनस बी 80,000 आता है, कंपनी बोलता 50 से ज्यादा नहीं रखने का है, तो मैं 30,000 क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। दिस आर सम हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल आई एम टेकिंग। तो the way your closing balance need to be adjusted provided company believes in keeping some balance, minimum balance on hand. Are you getting this? Otherwise A minus B is your final answer. Clear everyone? So students, let us start with the examples now. The first question student, very important, very classic example, because this is a cash budget which requires some interpretation of ledger accounts. They've asked you to prepare cash budget for 3 months ending 31st March, that is Jan, Feb and March, and for that they've given you December closing balances. Student, all these are your December closing balances, and thereafter these are your closing balances of Jan, Feb and March. If you interpret the ledger accounts on the proper side, students, this is going to be your opening cash balance, yes, no, January ka. And thereafter short term investment, if you interpret, this is going to be 300 for January opening. Thereafter this is 700 for January closing. That means during the year 400 investment has increased, which will be considered as outflow. After 700 it has become 0, and if it becomes 0 मतलब 700 डाउन हो गया आपका इन्वेस्टमेंट, यानी आपने सेल कर दिया तो इट्स रिसिप्ट। 0 का 200 हो गया मतलब आपने परचेज किया मतलब इट्स अ पेमेंट। This way you need to interpret your ledger accounts, and these are your predictions, these are your predicted, budgeted, estimated cash balances. So you need to just work on the basic knowledge of cash. Now if I talk about debtors, student, we have opening debtors, we have all the 3 closing debtors. So by applying the concept of debtors account, which will be like opening debtors plus credit sales minus closing, we will get what? We'll get collection from debtors, and that will be something like, if I take opening debtors for January with 2570 plus credit sales of January is 2100, if I make a total, this is 4670, and closing debtors, students, it is available for January, it is 2600, so I can take 2070 as a collection from debtor for the month of January. Fair enough. Same way you can prepare February, same way you can prepare March. Good to go ahead. So this is nothing but collection from debtors. Same logic you can apply to payment to creditors, and for payment to creditor you have to apply opening creditors plus credit purchase minus closing creditor, that will give you payment to creditor. This is for month of Jan. Same way you can prepare Feb, same way you prepare March. But the question arises, so we have opening creditors, yes. Trade creditors are normal creditors, yes, we have trade creditors, but sir purchase किधर है? तो परचेज आप ढूंढेंगे विद द हेल्प ऑफ सीओजीएस का फॉर्मूला, बिकॉज यहाँ पे सीओजीएस दिया हुआ है। अब आप बोलोगे सर ये तो सीओएस है, ओ मेरे भोले भंडारी, बैलेंसिंग फिगर आप चेक कीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट है, तो ऑब्वियसली नाम जो भी लिखा है, बट इट हैज टू बी अ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट द एंड, बिकॉज सेल्स एंड जीपी का डिफरेंस इज ऑलवेज सीओजीएस। तो बाय अप्लाइंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ सीओजीएस, स्टूडेंट, दैट विल बी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस minus closing stock, you will get COGS, and you have to calculate COGS for the period of Jan, Feb and March, which is actually given a balancing figure purchases ढूंढेंगे, and purchases आप यहाँ apply करेंगे payment to creditor में, and you will be able to apply the concept of creditors account and calculate payment to creditor. Fair enough. Next, other creditor student are constant. What is other creditor? Expense creditors, and they are constant. That means there are no changes in opening and closing. So whatever expenses are available, those are the expenses which are paid in cash. So these are the expenses: admin, selling, distribution and interest and so on. But mind well,
These are the expenses which are including depreciation of 60,000. See, it's given. So when you take a expense payment, instead of 315, you'll be taking 255. Instead of 270, you'll be taking 210. Instead of 255, you'll be taking 195 because we have to exclude the effect of depreciation. So when we prepare cash budget, we are going to take all admin, selling and expenses, interest, excluding the effect of depreciation. Fair enough? So these are the expenses, payment which has to be directly taken in your cash budget. Now the question arises, sir, what if other creditor balances are changing? No panic. The way we have done creditors account, will prepare other creditors account. Opening other creditors plus expenses minus closing will give you payment of other expenses. So it's one and the same. Here opening closing are same, so it does not make a difference. So whatever the expenses are there will be considered as a payment in cash. लेकिन अगर बैलेंसेस अलग अलग है तो आप अदर क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे जहां ओपनिंग अदर क्रेडिटर रहेगा प्लस एक्सपेंसेस रहेगा माइनस क्लोजिंग रहेगा, आंसर वही रहेगा. फेयर इनफ. नेक्स्ट, डिविडेंड ड्यू स्टूडेंट आप चेक करिए 485 का 485 जैन में है बट फेब में 0 हो रहा है. दैट मीन्स द डिविडेंड इज पेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब्रुआरी. एंड टैक्स ड्यू अगेन there is no change. That means there is no payments for the tax account. Fair enough. And capital expenditure meaning student is a fixed asset 8 lakh in the month of Feb, payment पे जाएगा. Proceeds of sale of plant 50,000 in the month of March, receipt पे जाएगा. And the question is done. Student only challenging point was to prepare these three things: collection from debtors, payment to creditors and COGS. COGS से परचेज मिलेगा, परचेज आप ऊपर लेके जाएंगे जिससे आप पेमेंट टू क्रेडिट ढूंढेंगे एंड आंसर डन. फेयर इनफ. दैट इज क्वेश्चन 1. स्टूडेंट क्वेश्चन 2 अगेन वेरी क्लासी. Here you have certain informations available. They have given you 6 months का projected statement. Yes, no, but what they've asked you is only to prepare cash budget for 3 months, July, August and September. So your focus is on July, August, September. In this example, the big point is about the rent. Rent is payable in advance on the last day of previous quarter. What does it mean? Check out, the rent is here. And mind you, this is constant. They can say April, May and June will be paid in the month of March. Because this is 555. 15 to be paid in March and March is not in our coverage क्षेत्र. मतलब वो बाहर है ना, हमारा टारगेट जुलाई अगस्त सितंबर है. अच्छा, अप्रैल मई जून के बाद स्टूडेंट बहुत सारे मई जून जुलाई करते. गलत भैयात. क्यों? बिकॉज अप्रैल में जून हो चुका है तो नेक्स्ट विल बी जुलाई अगस्त एंड सितंबर एंड दिस विल बी पेड इन द मंथ ऑफ जून. यस, नो. अगेन जून कवरेज क्षेत्र के बाहर है स्टूडेंट. तो वन माइट बी टेम्प्टेड कि रेंट का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन गलत है स्टूडेंट. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 555 दैट इज 15 विल बी पेड इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड यस वी आर कंसर्न विद सितंबर. अब आपका डाउट, सर ये फिगर कैसे आया? तो यस, इट इज कांस्टेंट. चेक करो, रेंट इज कांस्टेंट स्टूडेंट. दैट मीन्स यू कैन नॉट हैव अ डिफरेंट रेंट when the rent is constant. It has to be the same rent payable throughout the period. So this is the way your rent account will work. This will be considered the payment side. Stipend same month. Telephone expense every 2 months in arrears. Matlab April and May will be paid in June. Arrears matlab it is paid outstanding. They can say April and May will be paid in June. Thereafter not May, June. No. April, May के बाद June and July will be paid in August. जुलाई के बाद अगस्त एंड सितंबर विल पेड इन अक्टूबर. स्टूडेंट वी आर नॉट कंसर्न विद जून अक्टूबर, वी आर कंसर्न विद अगस्त. तो अगस्त में क्या आएगा स्टूडेंट? अगस्त में वो टेलीफोन एक्सपेंस आएगा जो जून एंड जुलाई का होगा. यस, नो. फेयर इनफ. रेस्ट आई थिंक वेरी सिंपल. ऑफिस एक्सपेंस इन द फॉलोइंग मतलब नेक्स्ट मंथ. ट्रैवल ट्रेनिंग इन सेम मंथ. पार्टनर असिस्टेंट सैलरी फॉलोइंग मंथ. 50,000 acquired of acquisition of computer payable in the same month, that is you can say July. Tax 20,000 in August. Branch opening expense 20,000 in September. And collection fees, audit fees, what they've given you is in following month, matlab after 1 month. Taxation very important. 50% same, 50% next. When I say 50% same, 50% next, what do you mean?
अप्रैल का आधा 50% अप्रैल में जाएगा, आधा मई में जाएगा, मई का आधा मई में जाएगा, आधा जून में जाएगा, जून का आधा जून में जाएगा, आधा जुलाई में जाएगा। ऐसे करते करते आप पेमेंट कर सकते। एंड देयर आफ्टर कंसल्टेंसी चार्जेस आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने बाद। अप्रैल का कंसल्टेंसी कब मिलेगा? मई नहीं, जून में आएगा। मई वाला कब? जून नहीं, जुलाई में आएगा। जून वाला कब? जुलाई नहीं, अगस्त में आएगा, एंड सो ऑन। Clear everyone? That is cash budget. And suggest 2 improvements. Student, they ask you only 2 improvement. And when I talk about 2 improvements, student, very clear. You have to guide 2 general improvement. When I say improvements, meaning if the cash balance is going on a negative ground, then you need to make some changes in your planning. And don't make a changes as far as routine activity is concerned कि सर हम डेटर्स का 6 महीने का जो क्रेडिट पीरियड दे रहे थे, 3 महीने का क्रेडिट पीरियड देते थे, सब कैश में ले लेंगे, क्रेडिटर्स को 8 महीने बाद पे करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं करेंगे, टेलीफोन पे नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता है। When I say improvement, improvement is nothing but something changes in your abnormal activities, like you can say this 50,000. सो पनौती तो कंप्यूटर से चालू हुई 50,000। कौन बोला एक साथ पे कर दो भाई? पैसा है, अच्छी बात है, बट उसको आप इंस्टॉलमेंट में खरीदो ना, 5-5, 10-10 हजार का इंस्टॉलमेंट लेके खरीदो। थोड़ा ब्याज लगेगा, एग्रीड, बट योर बैलेंस प्रोबेबली विल बी काफी पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, सेम वे यू कैन से ब्रांच ओपनिंग एक्सपेंस, ब्रांच ओपन कीजिए, एक्सपेंसेस ऑफ दैट ओपनिंग ऑफ ब्रांच प्रोबेबली जो आप उनको ओपनिंग के टाइम समोसा कचौड़ी खिलाते हो वो सब आप बाद में खिला सकते हैं, मजाक की बात है, बट ओपनिंग ऑफ ब्रांच एक्सपेंसेस कैन बी डिलेड। फेयर इनफ। डोंट से कि हम टैक्स डिले करेंगे, ओहो मेरे भोले भंडारी, ना चले, टैक्स हैज टू पेड एज पर द लॉ। क्लियर हुआ? यस, दैट इज क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 3 स्टूडेंट, एवरीथिंग इज गिवन पर यूनिट स्टूडेंट्स, एंड हियर द बेस्ट पॉइंट वाज students, the sales is given, yes, no, these are the sales units given. तो one might be tempted कि हम सब चीजों को ऊपर मल्टीप्लाई कर दे डायरेक्टली। गलत है स्टूडेंट्स, गलत है। ये सेल यूनिट है, वो सिर्फ सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आपको फिनिश गुड निकालना पड़ेगा। जो भी सेल्स है उसका 75% विल बी प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ सेल, मतलब उस महीने 25% प्रीवियस मंथ। इससे आपको फिनिश गुड का प्रोडक्शन मिलेगा, फिनिश गुड की प्रोडक्शन से आपको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मिलेगा। आई एम श्योर यू हैव डन दिस। एंड इससे आपको 3 टाइप के यूनिट्स मिलेंगे, एक सेल यूनिट्स, एक प्रोडक्शन यूनिट एंड रॉ मटेरियल यूनिट। हाँ, सेल्स से मिलेगा प्रोडक्शन, 75% टू बी प्रोड्यूस इन सेम, 25% इन प्रीवियस। मतलब अगर मैं जनवरी की बात करूं तो जनवरी का जो भी सेल है 75% जैन में रहेगा, 25% दिसंबर में रहेगा। सिमिलरली जनवरी का जो भी प्रोडक्शन है 50% उसका कच्चा माल रॉ मटेरियल हम जैन में खरीदेंगे, 50% दिसंबर में खरीदेंगे। एंड फिर उसके बाद स्टूडेंट आपको कॉल लेना है कि हम किसको मल्टीप्लाई करें। हाँ, किसको मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट? तो जो मटेरियल होगा रॉ मटेरियल, उसको हम रॉ मटेरियल यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, वेजेस को हम प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड को प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड सेलिंग प्राइस को हम सेल्स से मल्टीप्लाई करेंगे। यस, नो? फिक्स ओवरहेड इज 48,000 per annum, which means this is going to be 4,000 per month. Yes, no? Clear everyone? So this was one important point which you need to consider. Thereafter terms of payment are very much given, so that is easy, and opening cash balance is given 5,000. Student, the heart of the chapter as far as question number 3 is concerned is to prepare a working note where you will derive sale units, which is already given, production units and raw material purchase units. Clear everyone? आइए next point. Student, question 4, hi William Baumol model याद आया? Student, what is the formula of William Baumol model? William Baumol model is, याद करिए, it's under root 2 ft upon r. अभी surprisingly certain author uses different terminology. We use 2 ft upon r, where f is funds requirement, yes, no, t is the transaction cost, r is the rate of interest. In this example, if you check, the funds requirement is 1,05,000. No, never. We are concerned with per annum, which is 12,60,000. Yes, no? Transfer charges is 20 and 8% is the rate of interest. So student, it's similar to your costing EOQ model. याद करो, हाँ? So the answer will be 12,60,000 into 20 divided by 8%.
तो 2 into 12,60,000 into 20 divided by 8%. And if I take the root, it is going to be 25100. Student, what is 25100? It's the optimum cash balance. What does it mean? The student, 1260 is something which is available with you. You invest somewhere else and keep on withdrawing 25,100 at a point of time, and this is the best way to operate the business. इससे क्या होगा, आपका टोटल एसोसिएटेड कॉस्ट विल बी मिनिमम. नाउ व्हेन आई से टोटल एसोसिएटेड कॉस्ट, याद करो स्टूडेंट, वहां पे आपने कॉस्टिंग में पढ़ा था ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, तो इधर आप पढ़ेंगे टोटल एसोसिएटेड कॉस्ट एज टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट. स्टूडेंट, कॉस्टिंग में आपने पढ़ा था इसको टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट. द फॉर्मूला इज नथिंग बट number of transaction, which is F upon Q, into transaction cost. So I can say 12,60,000 divided by 25,100, and per transaction is going to cost you 20 rupees. So I can say 12,60,000 divided by 25,100, per transaction is going to be 20 rupees. So I can say this is 1,003 approx. And same way I can say total interest cost. Student, what is total interest cost? Is nothing but loss of interest. I repeat, loss of interest on what? On your funds withdrawn, on average funds withdrawn, in fact. So I can say 25,100 divided by 2 into average interest 8%. So 25,100 divided by 2 into 8%, it is on an average 1,004. सिमिलरली स्टूडेंट, यहाँ पे भी हम अगर हम डेसिमल राउंड ऑफ करेंगे तो 1,004 आएगा, ये भी 1,004 है, टोटल कॉस्ट इज 2,008. यस, नो स्टूडेंट्स, द सेम ईओक्यू कॉन्सेप्ट, सेम वे दिस हैज टू बी इक्वल एंड एज अ टोटल देयर हैज टू मिनिमम. तो यहां पे पूछा नहीं है, बट ये एक्स्ट्रा मैंने बताया कि अगर एग्जाम में पूछ ले कंप्यूट द टोटल एसोसिएटेड कॉस्ट विद 25,100, तो दिस हैज टू बी योर आंसर. फेयर इनफ एवरीवन? हाँ, दिस हैज टू बी आंसर 25,100. क्लियर? आइए क्वेश्चन 5 स्टूडेंट, इट्स द सेम एज ऑपरेटिंग साइकिल. याद करो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वी हैव स्टडीड दिस. यहां पे भी ऑपरेटिंग साइकिल पहले ढूंढना है. कैश साइकिल, cash cycle is nothing but total of debtors, stock and minus creditors. So student, if I take 75, 45, 120 minus 30, your cash cycle is 90 days. The cash turnover ratio, which is nothing but number of cash cycle, is 4 times. We have by default assume 1 year equal to 360 days in this example. Yes, no? Minimum amount of cash, student, याद करो हमने पढ़ा था, this is 120 lakh for 360 days. So multiply by 90 days, can I say 30 lakh is a minimum amount of cash to be maintained, a kind of working capital requirement. And savings by reducing average inventory holding period by 30 days, यानी आपका ऑपरेटिंग साइकिल 30 डेज कम हो जाएगा. तो स्टूडेंट, यहाँ पे आई कैन टेक सम लिवरेज. यहाँ दो तरीके हैं स्टूडेंट, एक आप नया ऑपरेटिंग साइकिल काउंट करो, नया वर्किंग कैपिटल निकालो, रिडक्शन करे, या सीधा आप 30 डेज का रिडक्शन करे. तो 120 लाख डिवाइड बाय 360 पर डे रिक्वायरमेंट आएगा, 30 दिन कम हो जाएगा स्टूडेंट. तो आपका 30 दिन कम हो जाएगा, तो 10 लाख इज अ रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल स्टूडेंट. बट 10 लाख जो कम होगा स्टूडेंट, वो आप कहीं और इन्वेस्ट करके उस 10 लाख पे आप 10% रिटर्न कमा सकते हो. तो योर सेविंग्स इज 1 लाख रुपीज. ये वाला 1 लाख वाला पॉइंट स्टूडेंट हमारा ऑपरेटिंग साइकिल में नहीं था. हमने जो ऑपरेटिंग साइकिल के एग्जांपल्स किए थे वहां पे सीधा ये पूछा था आपको कितना वर्किंग कैपिटल कम होगा. बट यहां पे आपको एक और चीज पूछा गया, सेविंग्स, और यू कैन से एडिशनल इनकम जनरेटेड बाय द कंपनी. अगर ये एक 10 लाख का लोन कहीं से लिया है तब 10% का ब्याज कम हो जाएगा, 1 लाख का सेविंग होगा. या ये 10 लाख आपके पास पड़ा है एक्स्ट्रा, अब वो कहीं और इन्वेस्ट करेंगे तो 1 लाख का आपका एक्स्ट्रा इनकम होगा. क्लियर एवरीवन? सो लिटरली आई हैव डिस्कस द होल एग्जांपल एट अ स्ट्रेच. फेयर इनफ? Question 1 student, similar to homework classwork का one है, तो you can ignore this. Question 2 student, I would say कि this is nothing but you can refer it after doing cash flow statement, because this is something from cash from operations. So if you have studied cash flow statement, I am sure you are able to rock this example, because this is similar to something which you have already studied in cash flow statement. याद करो, the first activity cash flow from ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैश फ्रॉम ऑपरेशंस आता है, इधर वही पूछा हुआ है. फेयर इनफ?
Student, very good example. I would say very unique example of the chapter. So student, this is one example where you are going to prepare a cash budget day wise. Day wise मतलब फ्रॉम मंडे 7 जनवरी से 11 जनवरी, मतलब 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख। स्टूडेंट 5 दिन का, आई रिपीट 5 दिन का आपको यहाँ कैश बजट बनाना है। फेयर इनफ। एंड यहाँ पर डे आपको वर्कआउट करना, पर मंथ नहीं है, पर डे वाइज कैश बजट बनेगा। तो स्टूडेंट इफ आई टॉक अबाउट लाइक 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख एंड 11 तारीख, स्टूडेंट विच इज नथिंग बट मंडे, ट्यूसडे, Wednesday, Thursday, Friday. So you have to prepare a cash budget for this 5 days practically. Huh? Let me guide you one example for this. Receipt from customers. Student, BACS matlab it's a kind of electronic clearing system. The full form obviously is given, Bankers Automated Clearing System. And in this example, student 7 जनवरी का सेल दिया, 7 दिसंबर का दिया। We are in the month of January. Yes, no? Yes. तो स्टूडेंट इट्स अ 1 कैलेंडर मंथ, मतलब दिसंबर वाला जो सेल किया होगा जनवरी में आएगा, जनवरी वाला फरवरी में जाएगा। टारगेट दिसंबर ये रहा 31। एंड एक्स के अंदर स्टूडेंट देयर इज नो क्रेडिट, पेमेंट इज बाय चेक, एंड इफ देयर इज नो क्रेडिट वी आर कंसीडर्ड 180। नाउ ये 130 जो आपने दिसंबर में सेल किया था 7 दिसंबर, 7 जनवरी को पैसा आएगा। एंड 180 जो आपने जनवरी में सेल किया है वो पैसा आपको जनवरी में ही आएगा। लेकिन रिसिप्ट ऑफ BACS इज इंस्टेंशियस, मतलब क्या, दिस 130 जो दिसंबर का सेल्स था वो पैसा जनवरी में आएगा, ऑन द स्पॉट आएगा। मतलब ये 130 स्टूडेंट्स ये आपका कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हो गया। हाँ, एंड ये कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आपका कौन सी तारीख में आएगा, जनवरी में 1,30,000 आएगा। आई एम नॉट प्रिपेयरिंग अ फुल कैश बजट, आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडिया। सेम वे सुन, ये 180 हमारे पास चेक से आएगा एंड दिस विल बी क्लियर, देखना, ऑन द सेम डे ऑफ द सेल इज मेड एंड विल क्लियर ऑन द थर्ड डे एक्सक्लूडिंग द डे ऑफ पेमेंट, मतलब हमारा डे ऑफ पेमेंट नहीं बट थर्ड डे। तो हमारा यहां पे जो आएगा 7 तारीख वाला वो 8, 9 और 10 तारीख को मेरे पास 180 आएगा। समझा एवरीवन? यानी वो थर्ड डे 8 नहीं, 9 नहीं, 10 को आएगा एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ चेक। तो स्टूडेंट ये आपका पहला वाला W का हो गया, ये आपका X का हो गया। यस नो, ये आपका रिसिप्ट हुआ। ऐसे ही आपको पेमेंट्स का इफेक्ट देना है स्टूडेंट। आइडेंटिफाई, ये 1 मंथ वाला है तो दिसंबर वाला आएगा, बिकॉज दिसंबर वाला जैन में आएगा। 2 मंथ वाला है स्टूडेंट तो ये आपका 75 आएगा, एंड नन वाला है तो 95 आएगा। अब इन तीनों का पेमेंट्स कैसे होगा वो आपको जस्टिफाई करना है। आर गेटिंग दिस? जैसे हमने रिसिप्ट जस्टिफाई किया वैसे पेमेंट, बट पेमेंट में ध्यान रखना ए के अंदर स्टूडेंट देयर इज अ स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ 45,000। व्हाट इज मीनिंग ऑफ 45,000? ए के अंदर कि ए का कोई भी परचेज होगा हम उनको पेमेंट 45,000 ही करेंगे हर 7 तारीख को। एंड देखो हम 7 तारीख को या पेमेंट टू क्रेडिटर करेंगे एंड ए के अंदर 45,000 जाएगा 7 तारीख को ही। समझा एवरीवन? डन एवरीवन? एंड सेम वे अगर आप देखेंगे प्राची लिमिटेड विल सेंड बाय पोस्ट, ये दोनों चेक वाला पॉइंट है स्टूडेंट, और ये चेक क्या है 7 तारीख का है, और ये दोनों चेक आएगा बट विच दिल लीव द प्राची अकाउंट ऑन सेकेंड डे। सेकेंड डे मतलब एक्सक्लूडिंग, तो 75 एंड 95 स्टूडेंट 8 तारीख फर्स्ट डे होगा, 75 95 ये आपका सेकेंड डे पे जाएगा पेमेंट्स में। क्लियर एवरीवन? तो पहले का आपका स्टैंडिंग ऑर्डर था, बाकी दोनों का आपका सेकेंड डे पेमेंट से। पेजेस स्टूडेंट बहुत सिंपल है, आप आराम से कर सकते हैं। अदर एक्सपेंसेस स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट, हम यहाँ पे 200 रुपए विड्रॉ करेंगे बैंक से फॉर पेटी कैश, तो आपका 200 रुपए विड्रॉ हो जाएगा 7 तारीख को, हाँ, एवरी मंडे। एंड द रूम क्लीनर इज पेड 30 फ्रॉम पेटी कैश ऑन वेडनेसडे। ना यू माइट बी टेम्पटेड कि हम 30 का इफेक्ट कैश बजट में देंगे, नहीं देंगे, बिकॉज दिस 30 इज पेड आउट ऑफ दिस 200 एंड वंस यू हैव विड्रॉन 200 कैश अकाउंट, that account is already affected by 200. if you pay out of that 200, उसमें 200 में से आपने आइसक्रीम खाया, बर्गर खाया, पिज्जा खाया या रूम क्लीनर को पे किया, अब वो उसका कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है, वो 200 का पार्ट है, कैश विड्रॉ हो चुका है। ऑफिस स्टेशनरी स्टूडेंट 300 रुपए का है, दिस विल पेड बाय डेबिट कार्ड एंड पेमेंट नेक्स्ट वर्किंग डे पे जाएगा। तो 8 तारीख को जब डेबिट कार्ड आप स्वाइप करेंगे आपका कैश अकाउंट में से 9 तारीख को जाएगा। एंड 5 न्यू सॉफ्टवेयर 6,500 का आपने 10 तारीख को खरीदा, एंड सेम विल लीव प्राची अकाउंट ऑन सेकेंड डे। हमारा टारगेट स्टूडेंट 11 तारीख का ही है,
तो हमारा टारगेट जो 11 का है, तो 10 तारीख वाला तो हमारे कवरेज क्षेत्र के बाहर हो गया, तो इस 10 तारीख का कोई भी इफेक्ट हमारे बुक्स में नहीं आएगा। सेम वे रूम क्लीनर वाला नहीं आएगा और ये नहीं आएगा। डन। ओपनिंग 2 लाख इज गिवन एंड प्रिपेयर स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर फंड फोरकास्ट। व्हाट इज क्लियर फंड? ये 11 तारीख आएगा स्टूडेंट। हाँ, क्लियर फंड मतलब जो आपके पास एक्चुअल कैश अवेलेबल है, एंड व्हेन से क्लियर फंड फोरकास्ट मतलब इट इज बैलेंस एज पर पासबुक। आई वुड सिंपली से पासबुक मतलब जो आपके रियल अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है। एंड यहां पे स्टूडेंट लास्ट में पूछा है शो क्लियरली अनक्लियर फंड फ्लोट। फ्लोट मतलब क्या? तो दिस इज गोइंग टू बी बैलेंस एज पर कैश बुक। स्टूडेंट याद करो, छोटे छोटे थे आप, रिकंसिलेशन बीआरएस पढ़ा आपने, वहां पासबुक एंड बैंक बुक को हम रिकंसाइल करते थे। आई कैन जस्ट गिव यू वन एग्जांपल ऑफ दिस कि आपने याद करो 180 का चेक यहां पे डिपॉजिट कर दिया 7 तारीख, बट आया 10 तारीख को, तो स्टूडेंट 3 दिन वो आपका फ्लोट रहा। 3 दिन फ्लोट कैसे रहा? 7, 8, 9 आपने कैश बुक में एंट्री कर दिया होगा, बिकॉज 180 कैश बुक में तो ऑन द स्पॉट एंट्री करेंगे, बट पासबुक में एंट्री कब हुआ? थर्सडे को, 10 तारीख, तो 7, 8, 9 ये फ्लोट रहा। सेम वे स्टूडेंट 75 एंड 95 आपने चेक इश्यू 7 तारीख को कर दिया, हाँ, बट वो पैसा आपके अकाउंट में कब डेबिट होगा स्टूडेंट? कब जाएगा आपके अकाउंट से? हाँ, 9 तारीख को। तो 7 और 8 ये चेक इश्यूड बट नॉट क्लियर है, बराबर है, तो आपका वो फ्लोट रहा, मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव फ्लोट दोनों रहेगा। इस तरह से आप फ्लोट को एडजस्ट करेंगे तो यू विल बी एबल टू कन्वर्ट योर क्लियर फंड्स टू अनक्लियर फंड्स। क्लियर एवरीवन? देयर वाज वन क्लासिक एग्जांपल ऑफ कैश बजट। स्टूडेंट क्वेश्चन 2, इसके अंदर मेजर एक पॉइंट है स्टूडेंट, बाकी सब नॉर्मल है स्टूडेंट। हाँ, अच्छा, मेजर पॉइंट के पहले लेट मी टेक वन पॉइंट। पहला पॉइंट आपका सेल्स का है स्टूडेंट, हाँ, बट माइंड वेल योर टारगेट इज ओनली फॉर 6 मंथ्स बिगिनिंग फ्रॉम अप्रैल। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, टारगेट इज अप्रैल टू सितंबर, बट द बैलेंस विच दे हैव गिवन इज फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर, सॉरी जनवरी टू अक्टूबर, तो कहीं ना कहीं इसका बैलेंस यूज होगा। वेजेस, सैलरी, ये सब डायरेक्ट पेमेंट करना है। 80% क्रेडिट है स्टूडेंट सेल्स, तो 20% कैश है। 20% कैश तो ऑन द स्पॉट आ जाएगा। जो क्रेडिट होगा स्टूडेंट वो 75% कलेक्टेड विद इन 1 मंथ, मतलब 1 मंथ क्रेडिट, एंड बैलेंस इन 2 मंथ, मतलब 2 मंथ क्रेडिट। फेयर इनफ। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट जनवरी का 1 लाख, जस्ट आपको समझा रहा हूं, 80% क्रेडिट है स्टूडेंट, तो 80,000 होगा, ये ओरली करना है एग्जाम में आपको। 20% कैश है स्टूडेंट, तो 20,000 इधर आएगा। अब इस 80,000 का 75% 25% जनवरी वाला फेब में जाएगा और ये मार्च में जाएगा, विच इज 60,000 एंड 20,000। समझा? ऐसे ही आप जनवरी का किया वैसे फेब का होगा, मार्च का होगा, अप्रैल का होगा, एंड सो ऑन। क्लियर एवरीवन? परचेज 80% सेल्स आर मेड ऑन क्रेडिट एंड पेड फॉर मंथ प्रीसीडिंग द सेल। सुनो, ये क्रेडिट नहीं होना चाहिए प्रैक्टिकली, ये होना चाहिए एडवांस पेमेंट। हाँ, हम 80% स्टूडेंट एडवांस में पे करेंगे, तो जनवरी का 80% दिसंबर में जाएगा, अप्रैल का 80% मार्च में जाएगा, मई का 80% अप्रैल में आएगा, एंड अक्टूबर का जो 1 लाख है उसका 80% सितंबर में जाएगा। दैट इज द रीजन अक्टूबर का आपको बैलेंस दिया गया है। फेयर इनफ? इंटरेस्ट स्टूडेंट 10% ऑफ 1,20,000 इज 12,000 एंड इट इज क्वार्टरली, मतलब 3,000 इन जैन, अप्रैल, देर आफ्टर जनवरी के अप्रैल में गया, सॉरी जनवरी, फरवरी, मार्च गया, अप्रैल, मई, जून जाएगा तो जुलाई, अगस्त, सितंबर जाएगा, अक्टूबर, एंड सो ऑन। और हमारे कवरेज स्टूडेंट सिर्फ जुलाई आएगा, बराबर है ना? और ये 12,000 नहीं आएगा, 3,000 आएगा। माइंड वेल, एडवांस पेमेंट 5,000 इन जुलाई, डन। एंड दिस इज अ पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, 20,000 बैलेंस इज देयर विच इज मिनिमम बैलेंस। यानी स्टूडेंट अगर आपका 20,000 बैलेंस है, मिनिमम है, तो एनी कैश सरप्लस डेफिसिट अबव बिलो दिस लेवल इज मेड अप बाय टेम्पररी इन्वेस्टमेंट लिक्विडेशन और सेल ऑफ टेम्पररी इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। व्हाट डज इट मीन? लेट मी टेक एग्जांपल, हाइपोथेटिकल। अप्रैल का आपका A माइनस B क्लोजिंग बैलेंस आया 18,000, लेट मी टेक 38,000, तो आप क्या करोगे स्टूडेंट? इन्वेस्ट करोगे 18,000 का, तो बैलेंसिंग विल बी 20,000। स्टूडेंट मई में आपका बैलेंस आया, लेट मी टेक 15,000, तो 15,000 तो नहीं चलेगा, 15 कम है, तो आप क्या करोगे? इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट करेंगे।
कितने का? यू कैन से 5,000 का, 20,000 रखने के पहले। बट चेक भी कीजिए 5,000 है, हाँ है ना, क्यों नहीं है? बिकॉज 18 5 बेच सकते हैं, 20 हो गया। स्टूडेंट जून में आपके पास बैलेंस बचा है 2,000 सिर्फ, वो भी नेगेटिव। स्टूडेंट्स हम पहले इन्वेस्टमेंट बेचेंगे, तो 18 में से 5 गया तो मैं 13,000 का इन्वेस्टमेंट बेचूंगा, बराबर। अप डाउट 13,000 का इन्वेस्टमेंट बेचने के बाद आपके पास 20,000 हुआ नहीं हुआ, बिकॉज 2,000 नेगेटिव था, 13,000 तो 11,000 हुआ, और 9,000 आप क्या करेंगे स्टूडेंट? बोरोइंग्स करेंगे। दैट इज व्हाट दे ट्राई टू इंडिकेट कि आप इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट है तो पहले सेल करें, एंड सेल के बाद भी पैसा बचता है तो आप बोरोइंग करेंगे। स्टूडेंट यहां पे आपको रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग नहीं बोला है, प्लीज इग्नोर इट, वी आर नॉट कंसर्न। क्लियर एवरीवन? So I've tried to explain this point in a very simple, lucid manner. Fair enough? Huh? So that was one very classic example of homework. So I think, student, this is end of this chapter. Yes, no? I've tried to cover almost all the important litigations of this chapter. And I'm sure when you revise this chapter, all the points which I've discussed in a crisp manner, you have to revise it very quickly. And these points definitely will help you to capitalize your exam portion. So this was from my side. Thank you very much. Best of luck and keep rocking. Thank you very much.